हेलो, गुड इवनिंग। जी हाँ, मैं अब से धरती पे नहीं हूँ। मैंने स्पेस की उड़ान लेके मैं चले गया हूँ स्पेस में। जी, I'm floating around the earth right now। सब देखो देखो। Oh my God! Hi you guys, वेलकम स्पेस में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैंने मैंने जैसे मैंने बोला, आई हैव टेकन अ स्पेस फ्लाइट एंड आई एम नाउ फ्लाइंग अराउंड द अर्थ। अब मैं धरती माँ पे नहीं हूँ, अब मैं पाताल में हूँ। आई एम फ्लोटिंग अराउंड इन स्पेस। सो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि well, actually the reason I'm doing this is because I am telling you how real is reality, guys. How real is reality? So welcome to my new show. जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं वापस आया हूँ, वो भी एक दिन। रुबीना जीत गई, बल्ले 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 बल्ले। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि we was like, what do we do now? अब क्या करेंगे? हेलो, अब ऐसे करेंगे कि मैं हर दिन आपको मंडे से फ्राइडे लेके 5 बजे यूके टाइम, 10:30 बजे इंडिया टाइम में लेके आऊंगा यही शो आपके साथ, ताकि आप मेरे साथ जुड़ सको। एंड आज मैं लिंक शेयर करूंगा, और जिस जिसको मेरे साथ यहाँ पे बात करनी है वो आ सकते हैं हमारे मीटिंग रूम में और अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है टाइम टू टॉक, जो है शो का नाम। और टाइम टू टॉक है आज, हाउ रियल इज रियलिटी टीवी। मतलब कितना रियल है रियलिटी टेलीविजन। हमने अभी बिग बॉस देखा है, उसमें से हम देख सकते थे कि बिल्कुल अलग रियलिटी चल रही थी घर के अंदर। और ऐसा बहुत बोला जा रहा था कि बिग बॉस बायस्ड हैं, और ऐसा बोला जाता था कि फेवरेटिज्म हो रहा है। और ये शोज, देखो मैंने बहुत सारे शोज करे हैं। मैंने बिग बॉस किया है, मैंने झलक दिखलाजा किया है, मैंने आई कैन डू दैट किया है, मैं कंटेस्टेंट भी रह चुका हूं। और मैंने शोज, जो रियलिटी शोज है जैसे गेट गॉर्जियस से लेके डे टू डे जो रियलिटी शोज है, मैंने उसको होस्ट भी किया है। तो आई थिंक आई नो व्हाट रियलिटी टेलीविजन इज ऑल अबाउट। मुझे पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, पर मुझे बहुत कुछ पता है रियलिटी टेलीविजन के बारे में। और इसलिए आज मैं आपको ये प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। डू यू बिलीव व्हाट यू आर सीइंग? क्योंकि जब आप देखते हो, क्या आप सच में यकीन मान लेते हो कि जो आप देख रहे हो वही सच है, या फिर बिहाइंड द सीन्स एक अलग सच बनाया जाता है, एक अलग सच होता है रियलिटी शोज में? सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? लाइक आर यू थिंकिंग दैट are you thinking that, like, what the hell is going on? And अगर आप ऐसे सोच रहे हो, are you thinking that is this right? If we are sitting here talking about the reality of reality television, like, ये reality television किसके लिए बना है? ये बना है हमारे लिए, ताकि हम we get entertained by this, right? But is it entertaining if you're being lied to? Are you being lied to? So the question, there's so many questions here. पर मैं आपके साथ सिर्फ ये देखो, बिग बॉस में जब मैं गया था, मेरे सारे टेस्ट हुए थे, साइकाइट्रिस्ट के साथ मीटिंग हुई थी। उसके बाद मुझे घर में बोला गया था कि अब आप 14 दिन पहले, मुझे 14 दिन पहले बोला गया था कि आप जाओगे। मतलब 2 हफ्ते का नोटिस मिला था, उससे ज्यादा नहीं। और फिर मैंने अपनी पैकिंग की, मैं घर के अंदर जाने के लिए तैयारी की। और वहां पे डिजाइनर्स भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, बहुत जल्द जल्द में बहुत कुछ हो जाता है। और फिर आप जाते हो घर के अंदर, और मैं पहला नहीं था, मैं दूसरा नंबर था, पर मेरा माइक नंबर 1 था। नंबर 1 था मेरा माइक नंबर। इसका मतलब है मुझे पहले एंट्री मारनी थी, और ये स्क्रिप्ट के हिसाब से था कि मैं पहले जाने वाला था घर के अंदर। पर मेरे से पहले चले गई थी तनीषा। सो तनीषा वेंट इन एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स फाइन, आई डोंट माइंड। पर जब हम अंदर गए और मैंने पहली बार घर का मतलब माहौल देखा, आई वाज लाइक व्हाट द हेल। एंड ऑनेस्टली मैंने कभी भी बिग बॉस इतना मतलब नहीं देखा था। मुझे पता था कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि मैंने यूके बिग ब्रदर बहुत देखा हुआ था। और I was like, when I went in the house, I was like, oh my God, ये मैंने क्या कर डाला? मुझे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा समझना चाहिए था कि ये क्या सीन है। तो मैं बिल्कुल, जिस तरीके से रुबीना और अभिनव ने बोला कि उन्होंने ज्यादा नहीं देखा था ये शो, उसके बारे में खबर नहीं थी। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी कॉन्सेप्ट का बहुत अंदाज था, पर बट इंडियन
बिग बॉस और यूके बिग ब्रदर बहुत फर्क है इसमें। मेन मेन फर्क है कि यहाँ पे ऑब्वियसली जो होस्ट हैं उनकी बहुत चलती है बिग बॉस में। बिग ब्रदर में होस्ट का कोई भी नाता नहीं होता घर के अंदर कुछ बोलने का, सिर्फ वीकेंड के ऊपर आते हैं, वो एलिमिनेशन करते हैं और वो एलिमिनेटेड घर के सदस्यों को वो बाहर लेके आते हैं और फिर उनका इंटरव्यू करते हैं। सिर्फ इतना ही करते हैं जो होस्ट होते हैं। पर हमारे बिग बॉस में आपको देखा जाता है, आपको आपको दिखाया जाता है कि जो सलमान खान कहते हैं वो ही माना जाता है कि वो ही सच है। एंड ये इसके ऊपर भी चर्चा होगी, हम आपसे भी पूछेंगे कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, डू यू थिंक that it's right that the host has so much power, like I'm asking you. So the other stuff is that एक तो ये बात है, तो घर के अंदर मेरे साथ बहुत कुछ हुआ भी और सिचुएशंस भी बहुत ऐसे हुई। ऑब्वियसली ये सीजन का जो 14 और 14 सीजन अभी निकला है, उससे पहले मैं सीजन 7 में था, तो 7 साल का फर्क है दोनों शोज में। तो उसमें से भी बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो बिल्कुल ही अलग थी। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं अभी घर के अंदर चले जाता, आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना लास्ट कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से एक अलग अल्टरनेटिव रियलिटी चल रही थी घर के अंदर, आई वाज लाइक क्या ऐसा हमारे साथ भी हुआ था? देखो मैंने अपने सीजन 7 नहीं देखा है और शायद मुझे देखना चाहिए, पर ऑनेस्टली आई एम जस्ट लाइक मुझे नहीं देखना, शायद क्योंकि मेरे पास पीएसटीडी है। पीएसटीडी यानी कि पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब मैं देखता हूं बिग बॉस में, मैं रोना शुरू कर देता हूं। ऐसा नहीं कि एम ही, पर मतलब जब कोई भी इमोशनल चीज होती है, मैं डायरेक्टली मेरा कनेक्ट होता है वहां पे, डायरेक्टली, एंड आई गेट रियली इमोशनल। शायद आपने मेरे रिव्यूज में भी ये देखा होगा कि आई गेट रियली इमोशनल। तो मैंने इस बारे में सोचा कि मैं इतना इमोशनल बिग बॉस की जर्नीज के साथ क्यों हूं, और मैं ये सीजन देखने के बाद भी मुझे अभी भी बिग बॉस में जाना है, मुझे अभी भी वहां पे मतलब बिग बॉस से बात करनी है, क्योंकि मुझे बिग बॉस जो कहेंगे मैं वो करूंगा। ये क्या सीन है? व्हाट इज दिस? शर्ना दास, थैंक यू। मेरा बैकड्रॉप नहीं है, मैं स्पेस में हूं इस अभी। आई एम इन स्पेस यू गाइस, आई एम इन स्पेस। हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट रियलिटी शोज। तो बेसिकली जो रियलिटी शोज मेरे लिए रहे हैं बहुत दुखदायक रहे हैं इन अ वे, क्योंकि आई एम सो इमोशनली, मे बी आई एम जस्ट अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो इसलिए मैं इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाता हूँ। और मैं बिग बॉस का कोई बुरा कहता है ना कुछ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैंने भी काफी कुछ बोला है अपने रिव्यूज में कि ऐसा वैसा है, पर दिल में हमेशा वो एक इज्जत है। मैं चाहता हूं कि बिग बॉस की इज्जत रहे। इट्स रियली स्ट्रेंज, आर वी अ कल्ट? क्या हमें एक ब्रेन वॉश करा गया एक तरह सा? आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू, यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस बिकॉज आई एम फीलिंग दीज थिंग्स। एंड कुछ भी करेगा, मतलब मैं तो अपने सीजन में कुछ भी करेगा टास्क के लिए, बिग बॉस ने बोल दिया बस करेंगे। So, you know, it's a lot of questions here for you guys. I'll talk about another show. झलक दिखला जा भी मैंने किया था, मुझे फर्स्ट राउंड में निकाला गया था, and I was very upset about this because I am a dancer. मैं बचपन से डांस स्कूल गया था, फिर मैं कोरियोग्राफर बना, मैंने गाने कोरियोग्राफ किए हैं जैसे कि कलियों का चमन। मैंने काम किया था कांटा लगा के ऊपर भी, पर मैंने एंड अप नहीं किया था शूट, इज अ लॉन्ग स्टोरी, बट डेफिनेटली वर्कड ऑन दैट आल्सो। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड गाने भी किए हैं जो आई हैव एट लीस्ट 8, 9, 10 मे बी नंबर 1 हिट्स, जो इंडिया में शायद 2003 से या 2006 तक। सो लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स मैंने किए थे बॉलीवुड में, एंड वो हिट पे हिट गए, एंड आई वाज वेरी लकी दैट वे। बट झलक दिखला जा में मुझे लिया गया, और वहां पे मेरा 1 महीने का जो एक परफॉर्मेंस होता है, वो एक अपने पहले तो जो कोरियोग्राफर मुझे दी थी वो उनकी कोई गलती नहीं थी, पर उन्होंने वो शो पहली बार कर रही थी, तो उनको कुछ नहीं पता था मतलब कैसे शो चलता है, कैसे कोरियोग्राफी शो के लिए होनी चाहिए। एंड वहां पे भी एक इश्यू हुआ था जहां पे मुझे पूछा गया था कि मुझे बोला गया था कि आप एक दूसरे कोरियोग्राफर के साथ जाओगे, और वहां पे लिखा भी था कि आपकी कोरियोग्राफर वो है, और वो बहुत जानी मानी मतलब टीम वाली थी जो वहां पे ऑलरेडी कर चुकी थी बहुत सारे सीजन, तो मैं खुश था। पर लास्ट मोमेंट में मेरा कोरियोग्राफर बदला गया, और एक ऐसी कोरियोग्राफर मुझे दी गई जिसको शो ही नहीं पता था, वो उसका पहला साल था। सो आई वाज लाइक, एक सेकंड, मैंने कंप्लेन भी की कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कोरियोग्राफर
कोरियोग्राफर जो थी वो मुझे मिलनी चाहिए, वो क्यों आपने बदल दिया लास्ट मिनट में? पर वो नहीं सुन रहे थे मेरी बात और उन्होंने मेरा कोरियोग्राफर बदल दिया। तो पहली बात ये हुई। फिर 1 महीना हमने रिहर्स किया, हमने कोरियोग्राफी की और वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर जो भी है वो देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे करते हो, आपको परफॉर्मेंसेस भी करने पड़ते हैं उनके लिए। फिर आता है कि 4 हफ्ते के बाद फिर कॉस्ट्यूम फिटिंग्स आती हैं, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर ये सब वर्क होता है, पर आप सेट पे पहुंचते हो और आपने कॉस्ट्यूम ट्राई नहीं किया है अभी तक। कैन यू इमेजिन? तो फिर पहली बार आप कॉस्ट्यूम पहन के आते हो, आप सेट पे पहुंचते हो और फिर आप वो कहते हैं कि आप ये टेक्निकल रिहर्सल है, इसके बाद आपका परफॉर्मेंस है। एंड यू लाइक पर हमने तो अभी कपड़े पहने, तो थोड़ा बहुत हम रिहर्स कर लेते। नहीं नहीं नहीं, अभी करना है, अभी 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 अभी। सो यू लाइक ओके, यू गो ऑन सेट एंड जो मेरे रूटीन में थे बहुत हाई किक्स थे और ये जो पैंट मुझे दी गई थी इतनी टाइट थी ना क्रॉच से, क्योंकि मैं पहली बार पहन रहा हूं तो मुझे नहीं पता था एंड उसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, तो वो ऊपर नहीं हो रही थी और ऊपर से पूरा नीचे का सामान क्रश हो रहा था मशीन में, खच खच। आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट। ठीक है ठीक है, आप रिहर्सल कर लो, बाद में आपका परफॉर्मेंस कर लेंगे आपको ये ठीक करके। तो फिर उस मोमेंट में जब हमारा रिहर्सल भी खत्म नहीं हुआ, हम वापस निकल रहे हैं, आते हैं ऑफ स्टेज और वहां पे हमें बोला जाता है कि आपको अभी आना पड़ेगा ऑफिस में। जो डायरेक्टर है, सबसे बड़ा डायरेक्टर कोरियोग्राफर है, जो भी है, मुझे भी नहीं पता, मैं कभी उनको मिला नहीं हूं। मुझे बोला कि आप अभी आप ये जो परफॉर्मेंस आपने की है ये कर ही नहीं सकते। ये मुझे बोला गया कि आप कलर्स फेस हैं, मुझे बोला गया कि आप कलर्स फेस हैं और क्योंकि आप कलर्स फेस हैं, आपका ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप आपका कोरियोग्राफी खराब ना हो, ये ना हो, आपको कुछ नया परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। पूरा 4 हफ्ते का जो काम है उसको छोड़ो, अभी आपको एक नया परफॉर्मेंस बनाना होगा, नया पूरा, मतलब टिप टू टॉप, हर एक कॉन्सेप्ट से लेके कोरियोग्राफी से लेके हर एक चीज को लेके आपको अलग बनाना होगा। मैं और मेरे कोरियोग्राफर ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, इतना हमने मेहनत की है, 4 हफ्ते की काम की जो भी है, अब वो मन में बसा हुआ है, वो ही करना है हमें। ये क्या मतलब है कि हमें 24 घंटे में, कल परफॉर्मेंस है, आज हमें नया परफॉर्मेंस बनाना पड़ेगा, ये क्या मतलब है? हम इतने कंफ्यूज, मतलब बाहर जो कार पार्क में वहां पे रिहर्स कर रहे हैं, वहां पे प्रॉप्स बन रहे हैं, जैसे हमें पता चल रहा है कि प्रॉप्स कौन से चाहिए, जैसे हमें पता चल रहा है कि कॉस्ट्यूम कैसे चाहिए, वैसे ही बन के आ रहे हैं। हम लाइक, हम मतलब वहां पे रात तक 10 बजे आए, फिर पूरा दिन हमने रिहर्स किया, फिर उसके बाद हमने परफॉर्मेंस किया। पर जो हमने परफॉर्मेंस किया बिल्कुल बेकार था, क्योंकि हम वो दिमाग में ही नहीं पड़ा अभी तक, जो भी था इट वाज बैड, ओके। पर जो हम परफॉर्मेंस कर चुके थे 4 हफ्ते के लिए, वो क्यों कैंसिल करी गई? एंड आई वाज जस्ट लाइक, दिस इज रियली वियर्ड, ऐसा क्यों हुआ? व्हाई इज दिस हैपनिंग? लाइक, कैन यू टेल मी why would they want to change everything last minute? Why would they want to confuse me so badly? Why? It didn't make any sense. बट इट मेक सेंस टू मी नाउ, क्योंकि जब आई एम स्टैंडिंग ऑन स्टेज और वहां पे माधुरी बैठी हैं, वहां पे करण जौहर बैठे हैं, वहां पे ब्राजीलियन कोरियोग्राफर भी बैठा है, एंड सब मुझे कह रहे हैं कि ओ एंडी, तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तुम घर जा रहे हो, जो भी है। एंड आई वाज लाइक, एक सेकंड, मैं तो डांसर था, ये क्या बोल रहे हो आप लोग? मतलब, एंड मुझे बोला गया था कि जजेस को ये बताया जाएगा कि आपको 24 घंटे में करना पड़ा परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से, जो उनको नहीं बताया गया था। सो कहीं ना कहीं ये मेरे साथ हुआ है कि मुझे अभी तक नहीं पता कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम जिक्र भी नहीं किया वापस, मतलब वो परफॉर्मेंस टीम ने जो भी है, एंड दे वर जस्ट लाइक, ओह सॉरी, गुड बाय। लाइक, व्हाट? एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम लोगों ने इसे करवाया, मेरे से ऐसे क्यों करवाया? तो आपने मेरा चांस क्यों खराब किया, ऐसे क्यों किया? It was really weird, and I'm still questioning it to this day. Imagine. This is the reality of reality TV. ये होता है। एक और शो की बात करता हूं जल्दी से, और वो है कि I Can Do That. हमें बोला गया था जब हम शो के लिए गए थे, आई कैन डू दैट जो है वो शो है, आपको 1 हफ्ता पूरा मिलेगा, एक ना एक चीज आपको दिखाई जाएगी जो बहुत मुश्किल है, जो मतलब बहुत अलग तरह के प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। आपको ये पूरा हफ्ता मिलेगा, ठीक है, पूरा हफ्ता, और वो हफ्ते में आपको सीखना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा और करना पड़ेगा परफॉर्मेंस। तो हमें सोचा ठीक है, 1 हफ्ता मिलेगा तो कर लेंगे। पर हकीकत में जो रिहर्सल टाइम होता था, वो परफॉर्मेंस वाले नहीं आए, आगे से टीचर नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पता चला 2 दिन ऐसे ही निकल गए, कुछ हुआ नहीं है। और वो हमारी गलती नहीं है, वो प्रोडक्शन या कुछ भी। लाइक उसके बाद हमें परफॉर्मेंस का टाइम रिहर्स करने के लिए मिला, तो
तकरीबन 2 दिन का वक्त, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो फायर जगलिंग होता है, या फिर मतलब बैलेंसिंग होती है, या फिर ऐसे आपको मतलब नेल कोलों के ऊपर नाचना है, नेल बेड्स के ऊपर आपको ये कर, तो बहुत ऐसी मुश्किलें चीजें होती थी। एंड जब हमें रिहर्सल के लिए लेके जाते थे, हमें ये नहीं पता था कि कहाँ है कहाँ नहीं, और एकदम से रिहर्सल कर लो, और इतने इतने मुश्किल चीजें जो कर रहे हो, इतना एक एक मौका मिलता था। और फिर मैंने एक चीज ना, मैं स्टेज के ऊपर गिरा था और मेरा हाथ जल गया था पूरी तरह से यहाँ से, क्योंकि मुझे कोलों के ऊपर जाके भागना था। मैं इसलिए वहां पे गिरा था क्योंकि जब हमने रिहर्सल किया था, जो कपड़ा वहां पे रखा था उन्होंने पैर पहुंचने के लिए, वो गीला नहीं था, वो सूखा था। और जब मुझे परफॉर्मेंस में लाइव शूट हो रहा है, वहां पे सब गीला करा हुआ है, तो क्या मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो गीला कपड़ा है? कैसे मुझे समझ में आएगा? आपने ये डिसीजन कब लिया, मुझे कब बताना था? और जब मैंने पैर रखा, क्योंकि वो गीला था और मैं ऑलरेडी एक अलग अंदाज में आता था वो पैर पूंछने के लिए, और क्योंकि वो ड्राई था, उसका अलग, यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ मूविंग। जब वो गीला है, इट्स वेरी स्लिपी, एंड आई फेल ऑन टू द कोल्स। इट इज लकी कि मेरा कुछ ऐसा वैसा नहीं जला, तो मेरा हाथ ही लग गया और ठस करके एक यहाँ पे कोला का पीस लगा, और वहां पे वो कोला का पीस लगा हुआ था मेरे हाथ में। मैं भाग गया कोला के ऊपर, और फिर मुझे ये करके ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ सेट पे, आप देख सकते हो कि आई एम ट्राइंग टू रिमूव इट एज आई एम रनिंग एंड डांसिंग एंड परफॉर्मिंग। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये रियलिटी का रियलिटी है, ये रियलिटी है। और फिर में अलग अलग चीजें उसके बाद भी हुई हैं रियलिटी शोज में। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ, डे टू डे जब हम करते थे, जब हम ऑडिशंस करते थे, मैं हमेशा प्रोड्यूसरों से बात करता था और बोलता था, मुझे आप कुछ भी इनके बारे में मत बताओ, क्योंकि जब भी कोई कंटेस्टेंट आता है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि वो एक रियलिटी हो। वो पहली बार मुझे मिल रहे हैं, मैं पहली बार उनको मिल रहा हूं, और जो वो केमिस्ट्री हमारी उस वक्त पे होगी, वो सबसे स्पेशल होगी। अगर हम उसको स्क्रिप्ट बना के ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, तो उसकी रियलिटी नहीं आएगी, उसकी कॉमेडी का मजा नहीं आएगा, और जो बंदे की जो रियलिटी असली निकल के आती है, वो ही मतलब मैजिक होती है। तो ये मेरा हमेशा मानना था। जब मैं आप कह सकते हैं होस्ट करता हूँ शो, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज एक रियलिटी हो, उसमें असलियत हो, और वो मन से आए। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दिस रियलिटी शोज, मुझे एक ना एक था कि मतलब इट विल बी लाइक दैट, बट आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। बट ऑनेस्टली द शोज that I did, वो बहुत फन थे। जो भी है, जो भी हुआ, जीते हारे वो कुछ नहीं, पर इट वाज ऑल सुपर फन। बट एट टाइम्स आई वाज लाइक के ये क्या है? क्या ये एक कंट्रोलिंग मेजर है? मुझे भी वो क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पूछूंगा। लेट्स टॉक गाइस। सो हु वांट्स टू कम ऑन लाइव? एनीवन वांट्स टू कम लाइव विद मी एंड आंसर द क्वेश्चन कि हाउ रियल इज रियलिटी? प्लीज टेल मी if you want to come. I will share the link right now and we will hear what you have to say, क्योंकि यही ये शो है कि मैं चाहता हूं कि आप अपना पक्ष भी रखें। I like this question. Tarang Goswami, is day to date scripted? Many contestants' behavior on dates are too extra. Also, most contestants were models. You know what? मैं आपको ये बताता हूं कि honestly, जहां तक मुझे खबर है, जहां तक मैं चाहता था, वो स्क्रिप्टेड नहीं था। पर एक ऐसी चीज होती थी डे टू डेट में कि हम ऑब्वियसली हम लास्ट मिनट पे उनको कोई भी डेट पे तो नहीं लेके जा सकते, राइट? हमें ऑब्वियसली वो समझ के सोच के करना पड़ेगा, राइट? तो हम ऐसे करते थे कि we basically we would just give them that, what is the date you want to do. आप डेट किस, इनको जो भी है, आपको ये नहीं पता कि किसको लेके जा रहे हो, पर आप कहाँ पे उनको डेट पे लेके जाना चाहोगे, तब वी कैन ऑर्गेनाइज दैट। नहीं तो वो शूट नहीं होता, सिर्फ इतना होता है। पर जो आई थिंक जो होता है इनफैक्ट डेट्स के ऊपर, वो था क्योंकि वो कंटेस्टेंट्स ही एक्सट्रीम हुआ करते थे। और जहां पे मॉडल्स की आप बातें कर रहे हैं, जो मॉडल्स आते थे ना, ऑनेस्टली अगर आप मुंबई की एपिसोड्स देखेंगे, वहां पे आपको देखेगा, क्योंकि ये कास्टिंग के लिए जो आते थे वो ज्यादा मॉडल्स ही होंगे, तो इस वजह से वो मॉडल्स थे। पर अगर आप दिल्ली की कास्टिंग देखेंगे या फिर कहीं और इंडिया में जहां हमने शूट किया, वहां पे तो ज्यादा मॉडल्स नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे असली लोग ही थे। सो आई एम पुटिंग आउट द लिंक राइट नाउ इफ यू वांट टू जॉइन मी एंड गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू के हाउ रियल इज रियलिटी। इट इज कमिंग राइट नाउ। आर यू रेडी? 1 2 3, लिंक इज आउट। लिंक इज आउट। अगर आपको कहना है कुछ,
how real is reality के ऊपर, you can join me right now. जो भी आएगा यहाँ पे, I will answer your questions always. रुबीना का इंटरव्यू मैंने मैसेज किया है उनको. आई होप कि वो जल्द से जल्द हमें दे दें इंटरव्यू, ताकि हम सब एक साथ उनसे बात कर सकें. सो गाइस, आई हैव पुट आउट द लाइव लिंक. Pakistani mom Bisma, you are there, I think, already. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. We've got lots of people now. Awesome. So I'm going to bring in the first guest. Bisma Noor is going to join me. Oh my God. I'm so stupid. एक second. मैंने ना ये नहीं पहना हुआ. मैं ये पहले पहन लेता हूँ, because otherwise I won't be able to hear anything. Okay. Hopefully that should do it. Okay. Hopefully I can hear you. Hi, Noor. Bisma even. Hi. How are you doing? Where are you? Actually, my husband owns a pizza place, and I was really hungry, so I just came here to eat pizza. तो मतलब घर की पिज्जा दुकान है और फिर आप घर पे जाके खाना शुरू कर दिया. That's quite normal. So how are you doing? I'm doing all right. Are you? Did you watch Bigg Boss? Yes, except the first 2 seasons, I've watched all of them. That's amazing. So did you like what happened this series this time? It was kind of expected, Andy. I think जैसे कुछ reality shows के season बढ़ते जाते हैं, they become more commercialized. So there's less reality, and there's I wouldn't say scripted, but they're more commercialized, so they get more control. I believe जब आपका season था तो it was more of spontaneous, where what everybody is doing. अगर कोई गलती कर रहा है उसको straight up उनको उसके लिए penalize किया जा रहा है. यहाँ पर देखते हैं अच्छा इसकी अगर fan following ज्यादा है तो इसको तो kick out नहीं कर सकते, तो रहने देते हैं, इसको खाली दंडित कर देते हैं या इसको खाली निंदनीय कर देते हैं. You know what I'm trying to say? But तो मुझे ये बताओ कि ये जो हुआ है, जो हम रियलिटी की बात करते हैं ना, रियलिटी टीवी, क्या रियलिटी है सच में या नहीं? तो अगर आप देखेंगे बिग बॉस, तो आपको लगता है कि उसमें कोई रियलिटी था या फिर वो पूरा ही मतलब बनाया है? रियलिटी थी, लेकिन ये एक अलग क्वेश्चन है कि हमें रियलिटी दिखाई किस एंगल और किस लेंस के थ्रू गई है. This was entirely different thing. Reality तो था to some extent. Obviously reality है कि अंदर लोग बंद है, reality है कि that's their real emotion. That's all reality. But what we see on the television screen, that is something where, like एक episode हुई थी जब राखी अंदर रो रही थी, तो बाहर रुबीना कहती है कि अब कैमरा का लेंस पैन करेगा और दिखाएंगे कि हम बाहर हंस रहे हैं. और that's exactly how it happened, because that's by realize this is what's going to happen. So, it's true. I think somewhere there is a level of creative editing that goes on. तो क्योंकि I think वो जरूरी भी है, क्योंकि नहीं तो वो अगर वो as is दिखा देते हैं, मैं दो धारी तलवार बन रहा हूँ, पर दोनों तरफा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो हमें वो क्रिएटिव एडिटिंग नहीं करके दिखाते तो हम बोर ना हो जाएं. नहीं, वो एक बात सही है, लेकिन they only show us from what they want to show. Show us what we want to see. Sometimes बाहर you remember season 10 बाहर tags हो रहे थे, hashtags, और इतनी रैलीज निकल रही थी कि ओम स्वामी को निकालो, but they didn't, because वो उनके तरीके से वो सही कर रहा था, तो वो उनको सेपरेट कन्फेशन रूम में बुलाकर उनको 10 लाख ऑफर किया कि 2 वीक के लिए बचना है तो 10 लाख की बलि चढ़ा दो. You remember season 10 पंजाबी. Yes. So I do remember. Yeah. So इसमें रियलिटी कहाँ है? आपको लगा कि ये बंदे को इसमें डाला तो ये तो निकल सकता है, चलो इसको बचा के रखते हैं, like that. तो जो ऑडियंस इतना पैसा खर्चा करी, इतना करिए, उसकी रियलिटी कहाँ पर है? वो सब कहाँ है? Right. Where is it? के साथ किया, that was horrible. किसके साथ? अभिनव के साथ? अली के साथ. अली के साथ क्या किया उन्होंने? चौथे नंबर पे निकाल दिया ना, बिफोर निकी. अच्छा, उसको चौथे नंबर नहीं निकालना चाहिए था क्या? ये क्यों नहीं निकालना चाहिए था? Because he deserved to know that he is at he knows now, but he deserved to know that he is at third in place, not fourth in place. He deserved to know in a live, in front of live audience, okay, this is not your place. I know उसको same amount of money मिली है, I know everything is the same, I know वो बाहर आके उसको reality पता चल गया, but इसमें reality क्या है? Just because आपका था कि अब कुछ भी हो सकता है या सब सीन पलटेगा टाइप,
जस्ट बिकॉज आपका एक टैगलाइन है तो आपने उसको प्रूव करना था। तो आपको लगता है कि बेसिकली अली को निकाला गलत जगह पे निकाला है और वो बनावटी है कि जो ऑडियंस कह रही है वो कुछ और है और जो दिखा रहे हैं वो कुछ और है, तो इसका मतलब है रियलिटी जो दिखा रहे हैं रियल नहीं है बेसिकली। टू सम एक्सटेंड नहीं, वो रियल नहीं है, इट कुड बी रियल, बट अगेन मैं कह रही हूँ वो सिर्फ क्रिएटिव्स और प्रोड्यूसर्स का जो लेंस है ना उनकी आंखों के सामने जो उन्होंने चश्मा लगाया है सिर्फ उस चश्मे से दिखता है कि रियलिटी क्या है। Well, thank you very much. I'm going to go on to the next guest. You can stay on if you like, and I will bring in the next guest. Hopefully, it's Gayatri. Gayatri, aap ho? Hi, Andy. Hello, Gayatri. How's it going? It's going good. I'm sorry I can't come on the video right now. My place is a little messy. देखो, my place is messy also. Earth पे, But पर I मैं don't अभी have a spaceship chroma. में हूँ. But I don't have a chroma to support it. I'm in a studio, so it's very different. I'm not in a studio. I'm in a spaceship. So what do you think? Do you think reality is real or reality television? So, Andy, मेरा ये मानना है कि while reality is quote unquote real, however, it is also catered to the need of the audience. बचपन में मेरे लिए reality show होता था अनु कपूर अंताक्षरी, where I had real participants. I'm telling you, where I had real participants because people wanted to see that. People were connected to music, chitrahar, rangoli, so they really wanted to participate in those shows. Time has changed now. People are willing to get married on television. People are willing to get dates on television. People are willing to fight, kind of Willing to shows like fight? I think roadies. it's more than willing to fight. They're willing to stand up for themselves. I know, but shows like Roadies, Splitsvilla. So I think the audience and the need of the audience is also what is bringing these kind of reality shows to us. You both had a very valid point. The last girl, I don't know the name. I think she said it correctly. कि जो भी क्रिएटिव्स चाहते हैं वो दिखाया भी जाता है, क्योंकि अगर मैं 5 लोगों को घर पे छोड़ दूं, एंडी अलग बैठ जाएंगे, शिल्पा अलग बैठ जाएंगी, गौहर अलग बैठ जाएंगी, उन्हें कुछ बातें नहीं करनी होंगी जब तक क्रिएटिव कुछ ऐसा टास्क ना लाए जहां पर या तो लड़ाई हो जाए या बहस हो जाए या फिर कोई अपना दिमाग लगा के कुछ प्लान करके वो टास्क जीत जाए. सो इट इज अप टू द क्रिएटिव्स एट द एंड ऑफ द डे. दे आर पेड टू डू दैट, and I think that is the essence of the reality shows. Come on, we have to agree कि 10 लोगों को आप अकेला छोड़ोगे वो कोने पे बैठ जाएंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे अगर आप उनको टास्क ही नहीं ऐसे दोगे. But tell me something. So ये जो एक लेबल लगाया जाता है बीबी के मेकर्स को कि वो biased हैं, क्या ये अच्छा लेबल है? Is it right? Biased is a word which the opposite party uses. अगर रुबीना के साथ अच्छा कर रहे हैं तो मैं खुश हो जाऊंगी, अगर राहुल के साथ अच्छा कर रहे हैं तो राहुल वाले खुश हो जाएंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सिलेक्टिव चॉइस ऑफ वर्ड कि कौन यूज कर रहा है. बट आई थिंक दे ऑल्सो गो बाय द नीड ऑफ द आर कि क्या अच्छा लग रहा है. कभी रुबीना या राहुल को नहीं निकाला जाता एंड से पहले. So they would cater to, again, it would again come to the audience point of view. They would cater to the need of the hour. अरमान और आपकी लड़ाई जब दिखाई गई थी तो उससे पहले बॉटल फेंकने पर लोगों को निकाल दिया गया था बिग बॉस से, धक्का देने पर लोगों को निकाल दिया गया था, लेकिन सीजन 13 का एंड्योरेंस लेवल कुछ और था. सीजन 14 में पुल में गिरा दिया जा रहा है. सो जो लोग देखना चाह रहे हैं क्रिएटिव्स उसे अलाउ कर देते हैं. तो वो जो बिग बॉस की दुनिया है, इट्स लाइक अ चाइना, वहां पे उनका ही राज है, मतलब कुछ भी कर लो. इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे. तो बिग बॉस के रूल्स पर हैं. ये भी तो सही है ना कि जो कलर्स हैं, जो वायाकॉम है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, उनको अपने बजट्स आपके उनके प्रॉफिट्स देखने पड़ेंगे. मतलब दे आर इन अ बिजनेस आफ्टर ऑल, नो? एंडी, आई एम श्योर यू ऑल्सो नो कि जब शो की कास्टिंग होती है वो बहुत टाइम पहले से शुरू हो जाती है. सोच समझ के चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है. दे आर अवेयर इन लोगों की टेंडेंसीज क्या है, इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके पास स्टोरीज क्या है, वो अपने साथ क्या बैगेज
क्या कंट्रोवर्सीज या क्या गॉसिप लेकर आ रहे हैं, सो पीपल आर अवेयर अबाउट इट। रुबीना की शादी का डिस्कशन रुबीना ने नहीं रिवील किया था, इफ यू रिमेम्बर इंट्रोडक्शन पर सलमान खान ने ही कह दिया था। सो वो एक बिल्डअप दे दिया जाता है, वो एक बिल्डअप दे दिया जाता है किसी भी स्टोरी को, उसके बाद इट इज अप टू द कंटेस्टेंट्स ऑल्सो, अदरवाइज शायद जैस्मिन नहीं निकलती, लेकिन राखी थोड़ा भारी पड़ गई उन पर, द वे जैस्मिन reacted to all that, so it is also up to the contestant, but biased is a very selective word. I would only use biased. I like this answer. I need to get on to somebody else, but you can stay with me if you like, and I'm going to move on to Sneha right now, and we'll ask a question. You can stay on and join the conversation, or you can go, it's up to you. But I'm going to have to move on because otherwise other people are in the line now. They're like, hamara waqt kab aayega? I'll leave it for today. I'll join tomorrow. Bye bye. Okay, awesome. Bye guys. So Sneha नहीं अनुज, स्नेहा कहाँ गई? अनुज एक सेकंड, मैंने स्नेहा को पकड़ना था, सॉरी स्नेहा, आपका ना मैं बाद में आता हूँ आपके पास। स्मिथ भी हैं और रोमा भी है, सब हैं। अभी अनुज आ चुके हैं मेरे पास। अनुज वेलकम। अरे इतना सुंदर जैकेट, क्या तुम भी स्पेस में बैठे हो? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो, मतलब आप पाताल में नहीं बैठे जैसे मैं पाताल में बैठा हूँ? तो आपको क्या लगता है कि रियलिटी शोज रियल होते हैं? सर कभी लगता है रियल है, कभी लगता है नहीं है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों? बिग बॉस तो मुझे रियल लगता है, बिग बॉस तो मुझे रियल लगता है, बाकी रोडीज और स्प्लिट्सविला तो मुझे ऐसे प्लान से लगते हैं, तो मैं देखता भी नहीं हूँ। बाकी मैं बिग बॉस देखता हूँ, और आपका सीजन मैंने देखा था, और आपने एंडी बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, बहुत अच्छे। लाइक आपके कपड़े मुझे अब तक, मैंने अच्छा हाँ कुछ भी बहुत पहन अच्छे। लिया। नहीं, आपका हमेशा डिफरेंट होता था, हमेशा अलग पहनते थे आप, ऐसा होता था। और वो सारे मेरे थे, किसी डिजाइनर नहीं दिए थे मुझे। आजकल तो डिजाइनर के कपड़े पकड़ पकड़ के पहनते हैं, वो सब मेरे खुद के थे, शूज से लेके सब कुछ। आजकल तो ऐसा होता है कि बस कुछ भी पहन लो, वेरी बैड यार। तो आप भी फैशन लेबल लगते हो, मतलब फैशनेबल हो आप, ऐसा मतलब है आपका? नहीं, मुझे अच्छा लगता था, आपके कपड़े हमेशा अलग होते थे, सबसे अलग होते थे, और हर वीकेंड के बाद पे कुछ अलग होता था, मुझे अच्छा लगा, वैरायटी थी आपके पास। वैरायटी, हाँ, वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैरायटी इज द की ऑफ लाइफ आई थिंक। तो मुझे ये बताओ कि रियलिटी टेलीविजन, देखो बिग बॉस तो एक जगह है, पर आपको लगता है कि जो वो दिखाते हैं वो असली होता है पूरा? नहीं एंडी, मुझे क्या लगता है ना, इसमें ये एक स्टोरी सा बनाते हैं, किसी को हीरो बनाते हैं, किसी को विलेन बनाते हैं, किसी का एक बार जैसे स्टार्ट हो गया तो उसका जैसे अब पॉजिटिव दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, किसी का नेगेटिव दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको एक मूवी बनानी है तो उसमें आपको हीरो भी चाहिए, विलन भी चाहिए, एक एंटरटेनर भी चाहिए, तो ये सब ट्राई करते हैं। और एंडी एक बात है, ये लोग है ना ऐसे रिलेशंस जरूर लेके आते हैं जिनमें कंट्रोवर्सी हो, जैसे आप सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि वाला देखो, शिल्पा विकास वाला देखो। इस बार भी इन्होंने, मुझे लगता है इन्होंने ट्राई किया था कि रुबीना वर्सेस अभिनव करवाना चाह रहे थे, पर हुआ नहीं है। तो फिर जैस्मिन वर्सेस रुबीना, फिर राहुल वर्सेस रुबीना हुआ एट द एंड। बट एक बात देखो एंडी, आप इस सीजन में ना पूरा रुबीना पे ही चला है, आप किसी का भी देख लो, रुबीना वर्सेस एजाज हो गया, रुबीना वर्सेस जैस्मिन हो गया, रुबीना वर्सेस राहुल तो था ही स्टार्ट से, तो शो तो सोनाली पूरा ही होगी, रुबीना पे था। सोनाली, कविता, हाँ, मतलब हर एक बंदे ने रुबीना से लड़ाई करके ही गए हैं। और एंडी एक बात से आप एग्री करोगे कि इस बार क्या हुआ ना, विपक्ष था ही नहीं अच्छा। जैसे आप लास्ट सीजन की बात करें तो सिद्धार्थ, आसिम, शहनाज, इन सब के अपना अलग फैन बेस था। इस बार आप देखो तो बिग बॉस के पास अच्छा विपक्ष था ही नहीं। आप यूट्यूब पे पोल्स देखो तो अराउंड 60 to 70% वोट्स रूबीना के ही थे, तो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था ही नहीं इन लोगों के पास, तो इन्हें एट द एंड क्या करना पड़ा कि राहुल को खड़ा ही करना पड़ा, वरना ये चाहते यही थे जैस्मिन वर्सेस रूबीना हो। सीजन के स्टार्ट से आप देख लो, वो लोग दोस्त बने, उसके बाद सारे टास्क ऐसे डिजाइन किए गए थे कि किसी ना किसी तरीके से जैस्मिन वर्सेस रूबीना किया जाए। और एंडी मुझे जब अली आया था ना, मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये दोस्ती टूटने वाली है, मुझे पता लग गया था कि क्या होने वाला अब। तो फिर अगर आपको पता चल गया था, इसका मतलब है कि बेसिकली आई डोंट थिंक कि ये असली है, राइट? नहीं, अगर आपको असली पता तो चल है गया एंडी, पर पहले ही, प्लान तो किया फिर आपको जाता कैसे पता चल गया? प्लान किया था ना, फिर है अगर एंडी, प्लान है प्लान तो रियलिटी कहाँ है? नहीं एंडी, एक्चुअली क्या है ना, ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं ऐसा, जिसमें जैसे आप और मैं हैं अंदर,
तो ऐसे अपन दोस्त हैं तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें अपन दोनों में मतभेद हो, और उसमें फिर क्या होता है ना, एक बंदा तो अब जैस्मिन का क्या हो गया था, जैस्मिन का मुझे क्या लगता है वे गेम कैसे कमजोर हुआ, उसने रूबीना की पीठ पीछे बुराइयां करना स्टार्ट कर दी थी। वो दोनों पहले दोस्त थे और रूबीना ने ये किया नहीं, तो एक्चुअली हम जब व्यूअर देखते हैं तो हमें तो रूबीना अच्छी लगी, या फिर हो सकता है रूबीना ने बोला हो हमें दिखाया नहीं गया हो, लेकिन हमें दिखाया गया कि जैस्मिन गलत गलत बोल रही है। जैसे आपको याद हो तो अली वापस आया था, उसने बोला था कि बाहर विनर मटेरियल रूबीना है, तो जैस्मिन चिढ़ गई थी कि क्या है चिल्लाती रहती है, कुछ तो करती नहीं है वो। तो वो एक जलन वाली जो चीज थी ना, पर वो ऐसा हमें क्यों दिखने हुआ लग गई कि थी जैस्मिन जैस्मिन ने। ने बाहर गई थी, जब जैस्मिन ने बाहर गई थी फिर उसने इतना मतलब गंद घोला था रूबीना के लिए, ऐसा क्यों किया? पता नहीं एंडी, मुझे तो जलन ही लग रही थी क्योंकि उसे समझ आ चुका था सीजन कौन जीतने वाला है, तो मैं भी जलन। और पता है आपको याद हो तो एक कन्वर्सेशन थी अली और जैस्मिन के बीच में, जिसमें अली कह रहा था तुझे ही तो जीतना था, तू ही तो कहती है जीतना है जीतना है जीतना है, जाना है जाना है हम्म जाना है। तो एक होता है ना आंटी, आप प्लान करके जाते हो कि मुझे जीतना ही है, तो फिर आपको लगता है ना कि मेरी जगह कोई और आगे जा रहा है गेम में, तो कहीं ना कहीं एक जलन हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि फिर मुझे लगता है कि क्या वो अली जैस्मिन, से भी जलती है अब, क्योंकि अली उसकी जगह पे आ गया था? नहीं अली से तो कैसे चलेगी, क्या बात कर रहे हो आप। क्या क्या लग रहा है, क्या आपको लगता है अभी देखा है कि हमने कि अली बाहर आके इंटरव्यूज दे रहा है कि मैं तो रुबीना के साथ रिश्ता कायम रखूंगा घर के बाहर, जैस्मिन की वजह से मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। एंडी एंडी एंडी, हाँ बताइए। आप देखें, अली पहले घर में आए और वापस जाके आए, तो उसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि पहले वो रूबीना के अगेंस्ट बोलते थे, लेकिन वापस बाहर हम्म जाने जाने के बाद वो जब से वापस आए हैं, तब ना तो वो खुद बोलते थे रूबीना के अगेंस्ट, और ना वो चाहते थे कि जैस्मिन बोले, क्योंकि उनको आइडिया हो हम्म चुका था कि बाहर क्या चल रहा है। आप देख लें, अब ऐसा था, बाहर वापस आने के बाद उन्होंने कभी भी रूबीना के लिए गलत नहीं बोला, पीछे से भी नहीं बोला। और जो कढ़ाई वाली बात चली थी, उन्होंने कहा मैंने सामने बोला था, नहीं, वो लोग बाहर थे और वो किचन में आए थे, और तब उन्होंने बोला था इस कढ़ाई जैसी औरत को मैं क्या, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, किचन में बोला था, वहां पे रूबीना नहीं थी। और जब उनसे बोला गया था ना कि आपने कढ़ाई वाली बात बोली थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उनके सामने ही बोला था जब इन्होंने मुझे चमचा बोला था, पर ऐसा नहीं था, हाँ झूठ। उन्होंने पीछे से ही बोला था ये बात। हाँ झूठ। ओ तो मुझे क्या लगता है बेसिकली ना, वो आपको जैसे आपको बेसिकली मुझे समझ में आ गया, आपको लगता है कि जो घर के अंदर होता है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, और वो हकीकत ही है, पर वो जिस तरीके से दिखाते हैं, जिस टास्क करते हैं, उस वजह से लोग लड़ते हैं। एक अभी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, स्नेहा के पास जाना पड़ेगा। अगर आप ओके जुड़ना ओके। चाहते हैं आप जुड़ के रख सकते हैं, अगर आपको जाना है आप जा भी सकते हैं, पर अभी लेट्स ब्रिंग इन स्नेहा। हाय स्नेहा। Hi, I think हेलो, हाउ आर यू? I'm good. How are you, Andy? I've सो been टेल मी, like व्हाट आर यू फीलिंग लाइक? I'm feeling really good that Rubina won because I was frustrated every week, to be honest. Like every week it ओके was a struggle. I never like I only saw like 3 Bigg Boss seasons. I didn't see yours, sorry, but I saw clips of yours after seeing your YouTube channel. But I really felt yesterday was the best day, but still I thought should have given her more time to express herself on the stage. I felt like it हम्म was an abrupt end. I think it happened the same way in Siddharth season 2, the last season, where the ending got abruptly end राइट। because they have to move on. But I was really happy that Rubina won, and because the reason is she's very strong, and so I'm in US now. Currently, I'm in near Boston. Okay. The reason I, to be honest, the reason I came here because I feel like there are a lot of people who are like I ran away from like not ran away. I came from India to escape my relatives and the notions that people have uh, and the society, like the way people treat each other, right? Like how would I I say think this? your volume is very low. Can you get the mic closer to yourself? Yeah, can you hear me now? Can I you hear can me hear now? you, but it's very muffled. Oh, okay. So yeah, I love that Rubina won. It was the best thing happened It is yesterday. the best thing that happened. I feel the same thing for you. Um,
I feel the same thing, to be honest. I feel like agar Rubina nahi jeeti na is saal, so I would have lost some. There would have been some. I would have had some heartbreak with the show. Yeah, I would have Because felt bad. I love the show. You have to understand that the show's done a lot for me. I learned a lot about myself from the show, and because of that, I give the show a lot of respect. And thank God that the right person won this year, because last year I was very disheartened. I was like, ye kya ho gaya? And then now it's like Rubina's won, world is restored back to its rightful place. It's like Big Boss is हाँ fine. So मुझे what do you बहुत think अच्छा about लगा. reality TV? अगर हम reality TV के ऊपर बात करें, do you think reality TV is real? Yes, I think मैं सोचती हूँ yes, reality TV is real. मैं इसलिए सोचती हूँ क्योंकि लोग आते हैं शो में, they don't want bad image for themselves, but people like, for example, Jasmine, right? I don't know what happened to her. She was my first choice at first, but then it shifted to Rubina due to some like situations and stuff. Now, Jasmine doesn't like, if it is not a reality show, right? Jasmine would have painted it differently. You understood, right? Like what I'm trying to say. Like Yeah. Jasmine would have painted the whole show differently for her. It is reality. That's why people came out for who they are. Like you can't Yeah. change yourself, or like you can't. But do you think that Jasmine's journey at the beginning, she was playing this sweet character, and then towards the end, her reality started showing, and then at the end, she is just who she is now? No, I don't like. She wanted to be good. She wanted to be real. From outside world, you don't face these situations, right? So basically, in the outside world, nobody comes and shouts at you. Like nobody fights with you. But and I think in the outside world, Jasmine came from a situation where she was getting all the attention. Even from her Instagram, I see that a lot of followers she has, like lot of attention. Mm-hmm. Once she came in, and she's seeing shifting directions, right? Like around Rubina, Abhinav, and everything. I think that's where she lost it. Like that's where she slowly started losing it, and she Right. forgot what's right and what's wrong, and she went into game and Are you got into sure? like Because I think you just said two different things. You're saying that on a reality show that people are usually, they can't hide who they are. And then on one side, you're kind of saying that she lost it and that's why she's behaving that yeah, way. So what is it? Did she lose it, or is she showing who she is? Like, what is it? like her true self came in afterwards. Like Right. that kicked in basically. Like both the statements are true, but it kicked in. Like Jasmine just kicked in. Like, hey, why is all the attention going the other way? I'm also the most popular TV face. Hmm. So I don't. Well, I'm I glad to talk to you, Sneha, but I've got to move on because I've got people waiting. I've got Roma and Satvir is there. We've got JD and we've got Rexy. So we have lots of people waiting. You thank you. can keep Bye. on the call if you want to, or you can disconnect. It's up to you. Rohma, are you there, Roma? Because I can't see your device is connected right now before I move on to you. Thank you. Roma. Bye. Bye. Bye, Sneha. Thank you for sharing your thoughts. रोमा रोमा तुम्हारी डिवाइस अच्छी नहीं है डिवाइस तुम अच्छा आ गई हेलो रोमा Hi, Andy. I turned it off. I turned it off myself because it was on for a while. Oh, okay, got it. So welcome, Roma. How's it going? Do you think reality TV is real? I do. I don't think so. I don't think it's real. I think it's a source of entertainment. I've lived in LA for the last like 10 years, and I've seen multiple reality shows filming here. We're very near Hollywood. I've worked in different places. I've worked in different companies where we were interacted. I'm sorry, I had to turn off my video. I looked horrible. Okay, we've seen you now, so I don't know whether you can undo us seeing you. It looked अब तो so हमने bad. आपका चेहरा देख लिया है जिस तरीके से आपका चेहरा गंदा लग रहा था अच्छा लग रहा था हमने देख लिया है अभी आप बंद कर देंगे उसका फायदा क्या है क्योंकि अभी हमने देख लिया है What are you doing? We've seen everything already. Now it's too late. We can't unsee you, Roma. I know exactly what you look like. And that color choice of lipstick, we saw it. So it is what it is.
It is what it is. So just be We proud don't of have. who you are, and you're beautiful in any form. So don't feel like you need to look a certain way. Roma has run away from me. Sadhbir, I'm coming to Sadhbir because Roma decided that she needs to change her lipstick completely after what I said. Oh, Auntie, you evil man. Monish, why don't you come on, get the link and come and speak to me, Mohnish? You wanted to come yesterday. I saw you, but you weren't able to join us. Were you? Maybe you were. Am I lying? Hello, Sadhbir is here. Hi, Andy. How are you? Hi, where are you? I'm in Canada. You're in Canada. Why is it like Canada. that? Are you in lockdown? Yeah, we are in Are you in lockdown. Canada, which? Canada, which you are doing what? Are you doing pangade or just generally just hanging? Well, I am in university right now. I'm trying to be a social worker. Okay, that's a nice thing to do. What kind of social work are you doing? Like, are you just beating people up generally, or is it? Well, my goal is to get into mental health counseling. So Okay, so we're going to get into a really serious conversation right now. I'm not allowed to joke about this. Okay, so you're getting into mental health counseling in a university. That sounds like a really, really important job. yeah, That is a really important job. And at this time with the COVID situation and the lockdown, so it must be very difficult for people. How's it going? it's pretty good. I'm already doing my placement with an agency where I'm working with the people with schizophrenia, concurrent disorder. So it's a good learning experience. So actually, when I ask you the question, is reality really what we see it to be? Is a different context with you, I think. I think you're looking at reality in a very different perspective. So let's hear about it. What do you think? Is reality TV helping people's mental health? Is it a representation of what's real? Well, what I see and notice when watching the show, when even I think you raised that point a couple of times in your live show, that how they are basically just mentally torturing Rubina in the show and her husband Abhinav. And I think it was so true. You could see them after the weekend Kawar, that they were just like they were done. Like they were, I see Rubina crying afterwards, and you can tell how they were just, torturing them so badly. And I think, I don't know, for the sake of TRP, Well, what I think at points Rubina was questioning her reality. She was questioning whether what she believes in all her life is wrong, because she's being told something that's completely opposite to what she's feeling and believing. So that's what I saw. Yeah, that's true. And even I think I watched a couple of her interviews after the show, and she was like, she was just not sure if she's wrong or everybody else in the house was wrong, because she was raising a totally different opinion and everybody was just going on a different tangent. So I feel that like people don't like strong women, and I think that's what made me like her, because she was really strong. And I want to see more women like this in this world, where like they take stand for themselves, and even. But you're in university like campuses right now, and you're seeing obviously there's a lot of women around you. Are you seeing a difference in the kind of mental health issues that women are facing to what men are facing? Well, I won't say women here, but especially in India, because my mom and my sisters, they're from India, and we kind of expect different things from them. We don't want them, like, I'm not talking from my side, but what I seen when I went to India, when women are like, well, I'm from Punjab, like a really small village in Punjab. We can see that. Yeah, That's why I said, are you doing Bhangra or something else? Understood. No, I really don't. And I said Canada witch as well. Canada witch. Yeah, Canada. Yeah. So no, I think I'm gonna try to speak in Hindi, because I need to improve my Hindi as well.
So चलो ठीक है, बोलिए. so मुझे लगता है कि हम लोग expect different करते हैं women से in India. We don't want them to be strong. हम चाहते हैं कि वो थोड़ा like अपनी voice को नीचे रखे जब बात करे. Even when we teach our sisters like आपको दूसरे घर जाना है, आपको बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी. You can't just tell them how you feel. You have to listen first and then react to it. You can't show your real emotions, real feelings. I think that's what we expect from our women in India. But the reality is different here. The girls that I go to school with, because I'm in a field where it's a very female dominant field. So I like there are like 20 girls and only two guys in my like class, or even where I'm doing my practicum, there's like 10 women and I'm the only guy there. So it's a very female dominant field, and I see how like things are different here. Like girls are allowed to do whatever they want to do. I'm not saying every girl in India are like like that, but we kind of expect that from them somewhere. Well, isn't it a cultural identity and a conditioning that goes with being Indian, that women have a particular way of being in the household, men have a different responsibility, so there's an ideology of the patriarchy of what runs India, but that goes quite deep into a lot of ancient cultures, whether that's Italians, whether that's the Greeks, whether that's the Aztecs, whether that's, we're going through all, I mean, when I say Aztecs, I mean South American. So there is that ideology of what women are supposed to behave like. And then there's the counter in the liberalized parts of, democracies that are liberalized around the world. Because I mean, some places in China, I'm sure, would be like this too. It is true that there is a cultural thing for sure, but I just feel like when we see a strong opinionated woman in India, we just kind of like, no, you can't be like that. This is what I felt. That's why there was like more haters of Rubina because of that thing, because she was more opinionated. She said whatever she felt to say. She was against Salman at one point when I think Salman called her husband a Saman, like just. So I feel like that's why we don't kind of expect that from women. But overall, I was really happy when Rubina won, and congratulations to you. I know how you supported Rubina and you wanted her to win as well. So it was a really I think I wanted her to win for those very reasons that you've mentioned, that it's really important to make sure that we set good standards of morality, of role models in India today, when we have such high rates of rape and the patriarchal angle on women is so controlling, and it needs to be a little bit loosened, and it needs to in fact start going the other way. A lot of people say, when they say you're a feminist in India, they usually don't understand what that really means. For me, I've lived in India for 20 years, so it's not that you are about making women above men, it's about equality of the sexes. That's what feminism means. It doesn't mean women being above men, it doesn't mean that. But what happens is, because it's been so unequal, like the men have been up here for so long, sometimes we do have to take the women way up so that we can then bring it down to a balance. And sometimes that's just missed. Okay, I've got to move on because JD has been waiting forever. Sure. But you can wait. You can be here, and I will bring everyone back at the end. But if you want to leave, you can leave too. But thank you so much, Sadhbir. Hopefully, you're going to be watching some of my other talks. I'm going to bring some really important issues, like I'm talking about fairness very soon. I'm talking about body shaming. I'm talking about like how it's normal to be thin but not normal to be fat anymore, and there's a lot of things like that. So I want to talk about all these issues, so hopefully I'll get you back at another time as well, and we can talk then. Great, thank you so much. Take care of yourself. Talking to you. Bye. Hello JDG. Good morning. We are winning. We are winning. We are winners. We won. Hey, before I forget, two things. वो सतवीर बंदा जो था ना अभी, I swear to God, I need to talk to him because I got what they call PBS, I guess, syndrome after Bigg Boss. So
Yeah, I guess PTSD. Yeah, that one. Post-traumatic stress disorder. That one. Okay. PTSD. We just made PBS. that one. I got PBS. I think PBS is a TV channel. I don't know. Like I feel like You're it right. is. You're right. It is okay. So yeah, because my daughter is actually working as a, she's 40 years old and she's been working in this line forever. And I said, Sophia, I have this problem, and she goes, Mom, go away. I got real problems to deal with. Kids these days, no respect. I swear to God, she just No shooed me away. respect. She says, shoo, She's Mama. like, shoo." she's like, stop watching this TV. Just stop watching it and you won't have the issue. Exactly. So But she doesn't know we have to watch. We have to watch. How they dare you? don't get it. They just don't get it. I mean, Treat me for addiction at least. At least treat me for television addiction. I mean, something. That's the only thing I watch is that, and my husband watches Crime Patrol. I don't know why. I mean, Oh God, that's really scary. I do this when he's watching Crime Patrol. But yeah, it was a funny. Actually, you know what, Andy? I wasn't watching as much. I've been watching Bigg Boss since season 7, and those first 2 or 3 years were a lot of fun. After a while, I didn't like it. In my opinion, Srishant should have won, and not what was her name, Deepika. In my opinion, Asim should have won, and not Siddharth. So I kind of got like Bigg Boss ick kind of a thing happening. And this year also, I was watching mainly because all of the reviews. And there's another girl that I used to watch, and you are Hindi reviewer. Her name is Rashmi, and the W. Anyway, so I built relationships in these little families, just watching them more than Bigg Boss itself. I do agree with what your topic was earlier with the young man. Satvir was the male dominance in certain cultures. And I wouldn't say it exists only in India. It exists really worldwide, maybe more in certain cultures and less in others. But thank God. I could relate with Rubina. You know why? Because I grew up in a family where women were given a lot of respect and a lot of priorities. 80% of my dad's salary went towards our education. We were 6 girls, 6 of us. And because I came from that culture and I came to the US, I think, and this is what Rubina must have gone through, I think a lot of time it went over me when people did discriminate against me. I didn't even realize till years later. At that time, I was just a little bit confused. And I think that's where Rubina comes from. Why are they not letting me speak my thoughts? What's wrong? I'm saying the right thing. I think, in my mind, I was thinking she must be going through a lot of those things, because years later, when I'm talking to my kids, they're the ones they're helping me realize, Mom, this is what happened in that circumstance. You were actually overlooked in this position, blah, 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 blah. And I go, oh, wow. And I'm of a very positive mind frame. So I don't look at the negative side. It didn't occur to me. And I'm kind of dumb too, maybe. Who knows? But no, don't self-depreciate yourself, because I don't think you're dumb. I think that, when you come from a conditioning where you're respected and loved and heard, and you go to a situation where that's not the normal, you're not the dumb one. You're actually way, way more advanced, and therefore you're not understanding why others are not on that level. The reason I say this is because I come from a mother who's also as strong as a Rubina. As my mom speaks her mind. She's never ever had to, she never had to wane into a ball and not be heard and not let her brilliance shine. So I come from that kind of a family where we have a matriarch and not a patriarch, so it's just a way of thinking. And I think when you try to dumb yourself down or say that you are dumb, that's again the patriarchy trying to attack your ideals. Don't let them do that. No, I didn't, not ever in my life. So, that I didn't. But yeah, that was one of the reasons I was hoping, like you said, Rubina, I would win. Now, regarding the bashing and talking about Salman and his hosting and the creativity of Bigg Boss, these were the 2 major areas. Salman has been going wrong last 2 or 3 years, I would say. This year, again, he was up against a strong woman. He likes the Shehnaz, the flirtatious, the giggly kind of women more, the submissive kind more, not the kind that would talk
back to him or question his authority in any way. And Rubina did that, and that just killed it for him for the rest of the season. So he was bashing, getting even with her in his own way. And the best part was she actually learned from it. She actually learned from it, and she became stronger because of it to a certain extent. The confusion that the young man was talking about, I think, will stay for a few days, but she'll come out of it, especially with Abhinav and all the family members that will probably give her the feedback, and maybe she'll watch it and realize it for herself that what she went through was, and maybe she even knew even as she was going through Bigg Boss, and didn't let it get the better of her, and help the whole process make her a more stronger person. But that's what Salman is all about. He does not as an actor, I love his movies. He's not the best actor in the world, but I love his movies. He brings a lot of cheer and hype and etc., positive energy and all of that. But as the host, I really, really wish and hope and pray that Bigg Boss would bring someone like Kangana Ranaut, or someone that could speak. Yeah, even Siddharth did better, for crying out loud. Kangana Ranaut, I don't know. My fingers are doing this with Kangana, because the Kangana again she grates against a different grain. I think Kangana is not. Kangana right now is going off in different tangents. She's called people porn actresses. She has gone down. Yeah, she's. So I think the extreme, the other extreme. She's gone to another extreme, because I think right now what Kangana Ranaut said about Rihanna, that she called her a porn singer. So I think, we have to be really, really, really careful about what we wish for. Jade. Yeah, true. Sorry. Maybe you should do it then. Maybe you should do it. Maybe we should put that in the universe, because I'm above Earth right now. I'm just floating around. Yeah, I see that. I decided I needed to leave Earth for some time. I needed to Hey, I have one more suggestion for you. I really, really, really want you to make a Andy's journey video. Make your own. Bigg Boss didn't do it. Oh my goodness! You know how much hard work that would be. I don't have any connection to getting the footage. It'll be worth it. Go on Woot and get the all. You got to do it, man. Yeah, maybe I do. Maybe that's what I do. What I'll do is I'll commission someone to do that for me. Maybe that would be a better. I mean, someone who's in India who can get Woot. First of all, I don't have Woot because I'm in UK. I don't have Woot either. Yeah. So what I'll do, maybe I'll commission someone to go there and get all the footage and make a nice journey for me, and then it'll be a surprise to me. Then I'll be like, "Hey, this is what it was like." There you go. Well, okay, I better go on because Rexy's here. She's next. But thank you, JD. I will see you soon, I'm sure. Yes, you will. I'm going to leave so someone else can come in, but I will be listening. Take care. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Rexy, are you there? Rexy. Abhinash is also waiting. Rexy, kya aap hain? Rexy. Oh, there she is. Hi, Rexy. Welcome. Finally, hum milte hain. Finally, we meet. Wow, it's nice to see you, Andy, live. Rather than coming and speaking about the points, it was me to interact with you. I wanted to just see what's going to happen now. Well, this is the thing. I've decided to do this Monday to Friday because I really wanted to connect with you guys. 1, 2, I want to talk about really important subjects. मैं चाहता हूँ कि ऐसे subjects के ऊपर थोड़ी हम light shine करें ताकि जो हम आम आदमी हैं हम अपना भी कोई पक्ष रखें इन चीजों के ऊपर ताकि we can understand where we are as Indians in the world today, and not just Indians, the world. Let's see what we are, what we're doing, and what do we mean in the world today. And I think it's so important. So what do you think? Is reality TV real? See, Andy, I believe that reality TV is real, but in the same time, they have favoritism and script is there, a slight thing, because they want to put some people up, which they favor. For example, we work in offices. There is favoritism. It's everywhere. So the person who they love, they will give more colors to it. So there is some, but in the same time, it is real. It is real. Like Bigg Boss, for example, it is real, but they can show it scripted by focusing in 1 or 2 persons too much. That will show that it is kind of scripted. So you can't say 100% that it is pure, but it's so nice to see these shows because there is some fun out of it. Yeah.
Yeah, there's definitely fun, but I think when it becomes torture, that's when you're just like, Yeah. a question happens कि ये अच्छा है जो हो रहा है इस बंदे या बंदी के साथ, मतलब ये उनकी रियलिटी को, मतलब एक एक वो चोट पहुंचा रहे हैं उनके दिमाग की हालत को, जब ऐसा हो जाता तब Tub, it is very bad because, for example, from our family, if somebody goes to the show, I'm going to literally be in tears when I see like Robina getting bashed every day, one weekend ke war. Even though I love Salman a lot, the way how he carries the show. If somebody from my family is there, or my brother is acting, I'm going to feel bad. I'm going to use all the abusive words for SK. But in the same time, when I'm not a part of it, or my family is not a part of it, I cannot. Don't hide now. I know you'll go this side and that side when I say about SK, but he's very very nice. But in the same time, towards Rubina and Abhinav, I felt I'm appreciating Abhinav's patience. I don't know how come he sat on the last day, still getting to know that SK doesn't like him. It was so evident. So these kind of thing, yes, it shouldn't be done because you're going to put somebody's inner self really down. It's very bad. Yeah. So, okay, so have you been a part of, or have you seen any other reality shows that you thought were maybe not real? Roadies, I was a big fan of Roadies when there was Regu and the twin brothers coming, because my elder brother has a bald head. So every time I see this, I used to keep smiling, saying, wow, what a show, wow, wow. But then when it kept going on, I understood its script. Like Bani J and all, I knew that, I used to like her a lot. But towards the end, we can understand that it was like, it is scripted somewhere. You can't hide it, even Splitsvilla. So these and also Jalak Dikla Ja, I feel it's rather than scripting, I feel they had lot of favoritism in that show. It was so evident that they want to bring the top 5 or top 3, which was Color's face or something like this. But in the same time, we love watching it because it's dance, it's fun, and again, it's not a part of our family going over there. So as a normal human, तो basically अगर आपकी family नहीं है तो फिर कुछ भी चलेगा basically. कुछ भी चलेगा. I'm not trying to be bad. It's because TV के time ऐसे pass तो मतलब वो इंसान नहीं है, बस आपके खानदान वाले इंसान हैं. अगर कोई दूसरा होगा ना, उनको बाढ़ में जाओ तेल लेने. Really, I didn't mean this. I didn't mean this. अगर तेरा बेटा जाएगा ना, वो कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. मेरा भाई नहीं होना चाहिए बस, right? This is what's happening. You're saying? No, not at all. Maybe I wasn't thinking it that maturely, but TV to on karna padega na. I need to watch something. So every time if I keep saying criticism out of it, my husband sometimes says, off the TV, what are you seeing? This is all scripted. So then what to watch? All the Friends series, everything is finished. Nothing is left now. There's so many things on, like, I don't want to mention these OTT platforms because they're not paying me to mention them, but there's one that sounds like Stress Flicks. There's one that sounds like, do you not watch any Netflix or Amazon Prime? I was trying. Yeah. Full time. I was just watching and I just closed it. And then I came to Andy saying that what's going to happen. Alt बालाजी, मतलब कितने हैं, मतलब Alt बालाजी पे तो मेरा एक नया शो आने वाला है, क्या है, देव डबल डी, तो मतलब वो देखना. और आई एम श्योर कि there will be lots. When is it? I think मुझे नहीं पता कि रिलीज डेट कब है, मुझे पता करना चाहिए. I'm very bad. I'm looking at my phone. You need to promote it. Let me check now. I'm checking. I'm a part of it. Yes. I'll just see Dev Double T season 2. Let me see release date. अभी मैं announce कर देता हूँ. बिल्कुल करो. Dev Double T season 2. Watch. It's not telling me. I want an easy thing. ये कुछ नहीं बता रहा मुझे. February 17th maybe. I don't know. Yeah, let me check. God, can you imagine? I should know these things, no? You should because you're following the teaser release a few days back. Alt Balaji and Z5 released a fun-filled trailer. Post the heartbreak, blah 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 blah. The show trailer, da 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 da. Yeah, I should start shredding. It will be on platforms on 20th of February. अब कौन सा दिन हो गया? एक second. 20th हो गया. It's done. It's 22nd today. So you better watch it, you guys. Yeah, Dave Double D जाके देखो. मेरा show. How come you didn't know about it? Look at this. I love this. Gayatri knows everything. She knows, she's up to date on everything. It's already streamed. यार मुझे किसी producer ने तो phone करा नहीं कि आप इसको promote कर दो. तो
तो मुझे कैसे पता कब निकलेगा? मैंने देखा था कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं वो एक्चुअली पता क्या मेरा ना फेसबुक और इंस्टाग्राम ना वो बंद कर दिया है क्योंकि उस पे वो हैक हुआ था, तो आई एम नॉट अप टू डेट ऑन दीज थिंग्स। यार हैक हो गया, क्या करें, अभी उसको ठीक कराना पड़ेगा। अब 2-4 लोग देख रहे हैं कि उसको ठीक करने के लिए फेसबुक भी चालू हो गए, गूगल भी चालू हो गए, तो अब बैंड बजेगी किसकी जिसने किया है। मनीत क्यों कह रहे हैं आई फील द रिएक्शंस इमोशंस इन रियलिटी टीवी बट फॉर श्योर सिचुएशंस आर क्रिएटेड बाय मेकर्स सो द कंटेस्टेंट्स रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। सो बेसिकली आई थिंक एवरीवन इज फीलिंग वेरी सिमिलर कि मतलब कहीं ना कहीं ये रिएक्शंस क्रिएट करे जाते हैं मेकर से, पर अगर वो नहीं बनाते वो रिएक्शंस, हम वो शो ही ना देखें ना फिर। Yeah, it wouldn't be interesting. If there is some masala, if noodles we eat without masala, it's going to be blunt. तो इसमें तो कुछ डालना पड़ेगा। यूके में तो मसाले के बगैर ही नूडल्स खाए जाते हैं, बाय द वे, जस्ट सो यू नो। सिर्फ इंडिया में इतना सारा मसाला डालते हैं नूडल्स में, टीआरपी उतने में नहीं मिलेगा ना एवरीबॉडी, या कोरिया में, या ताइवान में, या हांगकांग में, वहां पे भी मसाले डाले जाते हैं। बट सबसे ज्यादा मसाला जो नूडल्स में डलता है वो हिंदुस्तान में है। इंडियन चाइनीज तो अलग ही लेवल है, मतलब वो कुछ और ही है। लाइक व्हेन आई केम टू इंडिया आई वाज जस्ट लाइक क्या है ये चाइनीज, मुझे नॉर्मल चाइनीज चाहिए जो यूके में मिलता है। मतलब वो भी नॉर्मल नहीं होता, जो चाइना में जो होता है वो भी अलग होता है। सो लाइक वेयर इज द नॉर्मल चाइनीज, समवन टेल मी। Oh my God. Okay, what is Sonali Biswa says? I really want to talk about breast cancer as I face that, and I would really appreciate if you accept this talk. Okay, Sonali, that's going to go in my list of things to talk about. Let me write that down. I'll bring, of course, I want to talk about everything. These are the really important subjects we do need to talk about. Absolutely. Yeah. So that's a great Andy, subject for us to talk about. Why don't you host any channels, Andy? Why don't you be hosting anything in any channels? Why don't you try? It's not about people trying to copy you, but... You know what it is? I'm in England, I'm in lockdown, and I've been in lockdown for a year. But hosting on television is all about getting in touch with the television commissioners, right? They have to want to hire you. That's what it is. अगर उनको लगा कि हाँ एंडी को ले लो तो वो ले लेंगे, अगर नहीं लेना चाहते तो वो नहीं लेंगे, ऐसा है। And आजकल की डेट में ऐसा भी है कि I've been concentrating on acting a lot. So I have 2 movies releasing this year, and I have this show releasing. Oh, what is your role? Is it same that you do funny tactics in that, or it's something serious role? You're going to be a villain? No, I know. I'm in Radhe. Radhe, I'm playing a photographer. It's a funny role, I guess. And then actually the other film, it's a bit of a funny role also. I'm playing a drag queen. It's really funny. Oh. Yeah, so keep the release date in mind, huh? Don't forget it. I need to know the release date. Radhe is basically, oh, hello, what's this? Manish. I just love this Manish guy because he just keeps super chatting me. I love super chats. Excited to watch your show. Andy, big fan of Dave Double D. Watch for Andy. Yes, watch for Andy. Watch for. Ye kya hai? What is this? Andy's yesterday's grand finale was live telecast. Yes, it was. मैंने लाइव टेलीकास्ट किया था ग्रैंड फिनाले मेरे चैनल से. We were watching there. I was watching with you. Yeah. I'm so glad, you know, and I'm so glad that we all got together and watched it, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अगर वो नहीं जीती, इतना बड़ा मातम हम बनाते ना उसके बाद, it would have just been really bad. It would be like कि अब ये क्या हो गया? But then we won. And the party went for 2 hours after that. Yeah. We were still talking. We were still talking and having a party here. It was pretty awesome. It was a great episode yesterday. It was very nice. Already a big hit, Dave Double D. अच्छा hit हो गया? I like it. मुझे ना यहीं पे सब कुछ पता चलता है. यहाँ पे रिलीज भी पता चल गई. यहाँ पे. But that's nice. It made your day today. Yeah. Yay! Hit हो गए. Hit हो गए. Okay, Abhinash, are you there? Abhinash, क्योंकि तुम्हारा कैमरा तो ऑन नहीं है. Abhinash, क्या तुम्हारा? Oh my God, इन्होंने इतनी जल्दी लगा लिया. It was like he was waiting forever. He's been waiting forever. So, Rexy, if you want to join us, you can. But right now, it's Abhinash's time. I'm gonna take you out of the room, and I'll bring you back if you're there. Hi, Abhinash. How's it going? Hello, it's everything's fine, and I'd like to say that yours was the only live I watched for this season, and I think because I resonated a lot with you. So, oh, thank God! Yeah, thank God you did. I'm so glad.
I'm so glad to build this community of people that are just exactly that, resonating with each other's thoughts. And Correct. I think this is a really safe space that we've created. We all have created this It's space. not Thank you, bad Manish, for to the super chick. supporting somebody you like, because at the end of the day, I feel that as humans, everybody is biased somewhere. So if you liked Rubina, we liked Rubina. So there's no, some other people who review, they try to be very unbiased sometimes, but then the essence goes, no. I don't like, if you are being like, if I watch some other review, they are trying to be fair to everybody even if they don't like them, so doesn't feel real. But Well, that's the thing. I think with me, I have to say what's on my mind. I have to say what I'm feeling. If I don't like something, I'm going to say it. And the thing what happened with Rubina was, जब Rubina ने भी कुछ गलत किया होगा, तब भी मैंने बोला कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा. It is not a case that I was only like blindly following her. It was a case that, but most of the things she did, I liked. You own to the fact that you like her. People generally don't. So, but then they don't connect with the audience. You connected, so that's great. I think that's one of my gifts from God. I connect with the audience. You know why? Because I feel like I'm one of the audience. I'm honest. Like that's what I really feel, because we're all an audience. Even Brad Pitt is sitting there watching TV, right? Even Deepika Padukone sits and watch TV. Like, come on, we're all watching TV. We're all audience. Just because we're on screen doesn't make us any different from anyone else. That's my true belief. So I think that's why when I watch Bigg Boss, I'm watching it like an audience. I mean, yes, I might know some people that are in the house. I might know who's running it. I might get news quicker than most people because I've been in the house. But that's just perks of my career, I guess. So tell me, do you think reality television is real? I feel that there are two types of reality shows. One is the reality TV, which is like Keeping Up with the Kardashian, which India has not explored much. Gohar Khan tried to do it, but it wasn't successful. And the other one is the reality game show. So when we talk about a Bigg Boss, I feel along with being a reality show, it is also a game show. So the basic difference being that the other one doesn't have a format. A game show always has a format. The problem arises for me is when they don't stick with the format. So there where the American shows, they stick with a format, so you know what you are getting into and it will exactly pan the way it is. But in India, they bring in a lot of changes in the format, which is something which I'm not cool with. But other than that, I feel that it's real. But in game shows, I also feel that a lot of situations, especially in Bigg Boss, the situations are manufactured, but the emotions of the people are real. So because they are at the end of the day, they are real people. They can't fake it 24/7. So Rakhi Sawant also, who is a veteran in reality television, she has done, I think, the most number of reality shows in India. So she can actually create a character for the camera, but 24/7 she also cannot fake it. So at the end of the day, so tell me, with Rakhi Sawant, which bits were the real Rakhi Sawant? I feel whenever she used to talk to somebody in general, like a two-person chat, she was being real. Whenever she used to create these characters for like a Julie or the other one she did with Abhinav, I think there she used to come up with one-liners or something that was, she was scripting it basically in her head before saying it. So, honestly, like when I was watching her, I didn't think that she was being herself at all ever. I think there were very tiny moments. She is very experienced in this genre. But so she was very tiny moments of reality. Like, I think that she knows how to use a situation to amplify it, to get a message across. And she uses it every time. Is a true reality TV star. She has been doing this for
years now. I don't. She's one of the OG. She's one of the OG. She started this She knows it all. crazy reality scene in India. So you know, And she knows it all. She has done, I think, more than 10 reality shows. So, so she knows exactly what to do, when to do. So maybe she, maybe it favored her somewhere. So she knew how to handle the cameras, but other people are not that, experienced. So I, at large, I felt that people were real. What Like about yeah, like a Jasmine was real at the beginning, and at the end we saw like a different I turn think of events change this person. I found her real only because the situation changed. People say that when they are good, they say that we are real. When they don't behave in a positive way, they might say that we were faking it. But no, when you are good, also you're real. When you are behaving in a negative way, also that's you. So that's but I the think case. what I understand what you're saying. I do get what you're saying, that there's a negative and positive side. But I think personality-wise, it's very funny to go from this very timid, crying, childlike personality to this like vexed older woman vibe. It's a completely different type of personality. So and if you're that multifaceted in a personality, then that's why you question that, can this be the same part of a personality that's so far apart? I think that's the question. But I found her very organic. I did not find that she was forcing it. She became negative because she was jealous of Rubina, and that one emotion of the lady, I think, took over everything in that show, even outside the show. Then she came back. She had only one motive of putting Rubina Dilek down, and that was the only thing that was going around in her head. Even that conversation she had with Rahul Mahajan, the only problem she had was that she couldn't go farther than Rubina. It was not winning the show, but she wanted to go ahead. She needed to be the top bahu. She needed to be Yes. the top bahu. Yes. And she Yes. wasn't. And some people are like that. They are competitive and competitive with certain people. So I have seen people like that in real life as well. So people could be. Right. Well, thank you very much, Abhinash, for your thoughts. I'm going to keep bringing different subjects on so that please come back and please discuss, because this is what this show is about. Monday to Friday at 10:30 p.m. India time, I'm going to be asking questions like this, and I want these answers now. I think the next one's going to be body shaming. You did a great job. Thank you. मैं फिर से करूंगा review next year. 8 महीने में we'll do it again. But right now, I'm going to keep going with other things. So if you have any ideas, please share. Take care of yourself for now. And everybody who's watching, it's been an hour and 22 minutes of amazing understanding of our psyches. And I'm going to keep asking this question. कल का subject है body shaming. अगर आपको body shaming के ऊपर बात करनी है, आपका राय बतानी है, आपका पक्ष सुनाना है, तो आप यहाँ पे आके आपका साइड दिखा सकते हैं, because I think it's a very important thing. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम ये चीजें के ऊपर चर्चा करें, ताकि ये इसका जो एक टबू है सोसाइटी में, हमारे हिंदुस्तानी सोसाइटी में across the world. When I say Hindustani society, I'm talking about NRIs, I'm talking about everybody, the Indian diaspora across the world. We have to discuss for everybody, and this is a platform where we can do that. And guys, if I'm gonna be putting out the link tonight. आज मैं लिंक डालूंगा कल के लिए, वो लिंक आएगा जैसे कि आपने ये ढूंढा है. It's a live link as normal, but 10:30 UK timing. Oh my god, 10:30 India time, and US time भी है कुछ ना कुछ. आप बता कर लो.
I'll put Yeah, it in the because link. timing was a big issue because your show used to come after Bigg Boss, and nowadays they air for 1.5 hours. I think earlier it was a 30 minutes episode, and now it's 1.5 hours. Then my sleep cycle, because I live in India, so my sleep cycle gets disrupted because I have to sleep. Like crazy because it's so late. But what's this reviews corner says Andy Fizafooz के लाइव में जयेश ठक्कर खुद आए एंटर हुए एंड एक रुबीना फैन ने उसको इतना क्वेश्चन किया कि वो आंसर नहीं कर पाया एंड one question, Andy, I wanted to ask, because you are a celebrity, can I ask it if it's not sure, you can ask me a celebrity question. Yeah, so why do you celebrities put yourself through such shows? Is the money that great? Because reality shows, you mean? Yeah, because you need not I'll tell you why I did it. I'll tell you why I did it, because I can't speak for anyone else, but I can speak for myself. मैंने बिग बॉस इस वजह से किया था, जब मैं उस टाइम पे अपनी करियर में जहां पे मैं था, मैंने चैनल वी में 6 साल काम किया था. मैं चैनल वी का फेस था, वीजे था, मैं बहुत सारा कुछ काम किया वहां पे, और फिर वहां पे मुझे काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि आई थिंक चैनल वी का जो एक अंदाज था वो कूल चैनल वी वीजे वाला खत्म हो गया था, और वो एक धारावाहिक में पहुंच गए थे, और मुझे वो काम नहीं करना था, तो मैंने चैनल वी छोड़ दिया. फिर 1 साल में मैंने सिर्फ 2 शो किए. जो बंदा ना 15 शो करता है महीने में, यू नो, लाइक 2 एक दिन में करने पड़ते हैं, तो वो बंदा जो 2 शो करेगा पूरे साल में, तो वो थोड़ा ना ऐसा हो जाता है, क्या करूंगा अभी मैं. तो मैंने अभी ये सोचा कि अगर मुझे जनरल एंटरटेनमेंट, यानी कि जो बड़ा एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनके ऊपर काम करना है, तो मेरा एक स्टेपिंग स्टोन कैसे बन सकता है, मेरे कनेक्शंस कैसे बन सकते हैं, एक वाइडर ऑडियंस मुझे पहचान कैसे सकती है. ये मेरा मानना है, ये मेरे लिए, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, ये मेरा सोच था कि मैं एक यूथ आइकॉन कह सकते था, और वहां से एक एक जनरल एंटरटेनमेंट फेस कैसे बन सकता था. अब मुझे कोई टच भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चैनल वी का फेस हूँ, चैनल वी वो नहीं कर रहा जो मैं करना चाहता हूँ. उसके बाद फिर मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा कोई रियलिटी शो करता हूँ जहां पे मुझे लोग देखेंगे, हाँ ये गैम्बल है, मुझे पसंद भी कर सकते हैं, मुझे नापसंद भी कर सकते हैं, तो गैम्बल है, पर उसमें अगर मैं आ जाता हूं, एटलीस्ट मुझे लोग देखेंगे, और शायद अगर वहां से मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ताकि मैं लार्ज स्केल शोज होस्ट कर सकूं, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मैं करना चाहता हूं. और उससे वही हुआ, क्योंकि मैंने बिग बॉस किया, मैं एक हाउस होल्ड नेम बना. उसके बाद आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड विद ऑल द फैंस लव, with God's love. I'm very, very spiritual, so I'm super grateful for all of that. But जिस तरीके से वो मेरी जर्नी हुई बिग बॉस में, मुझे पता था कि I was not like favored a lot of the time inside the house, but Salman Khan favored me. That's 100% true. So I will always love him for this, and I can never go against him for that, because he made me strong, you know. So the thing is, after that, then I hosted India's Got Talent. I hosted a slew of main stage big shows, the mainstream shows, mainstream shows. And now if I go and host any show on TV, it'll be a mainstream show, you know. And I'm in a place now in my career where I can choose the work I want to do. I've done so many films. I've got 2 releasing this year. I've already done 3-4 films already, and I've got a couple of shows coming out too. So I'm very lucky and I'm very blessed. But you have to make the decisions. Now, I don't know why Rubina did the show. I don't know why Arman, Gohar, I don't know why any of those people did the show. Because, you know, a classic example of this going wrong is Hina Khan, because when she did this season 11, her image was completely positive, and it changed 360 degree after the show. And after that, look, honestly, now if you have a personality, it's gonna show. You said this yourself. Now, जो मैं हूँ घर पे, मैं ऐसा ही हूँ. मेरी मॉम है, वो मुझे ऐसे पहचानेगी क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ. The problem is when you have a on-screen persona which is very different from your off-screen persona. When you go into reality shows, जब आप reality shows करते हो, फिर आप वो नहीं हो जो लोग देखना चाहते हैं आप में, तो फिर तब issues होते हैं कि you're like, this person's not nice. This person's not the person we like. You were always into non-fiction, so you never did anything from the fiction
Exactly. In fact, मैंने तो serial तक करा ही नहीं एक बार भी. I don't mind doing a serial. आजकल तो मतलब वो चील बन जाते हैं, ड्रैकुलर बन जाते हैं, नागिन. यार, why is there no lead? Why is there no lead Nag? Why don't they make me the next Nagin? Yeah, what is this? Yeah, What is this sexism? See, sexism goes both ways. Why is always a beautiful Nagin? Why is it never a beautiful Nag? Nag 10 में मुझे cast करो, मैं बनूंगा Nag. That's true. That's true. There are no roles for men on television, on fiction television right now. So What I love about highly this, I unfair. love answering these questions. Look, Andy, I love your shoe style. Thank you. You know, but I lost 300 pairs of shoes. I had 300 Why? pairs of shoes in India. I lost them Oh, okay. in a flood. They got flooded. So all my shoes, wo famous shoes, wo black wings wale shoes, sab chale gaye. But it's okay. I'll get more. Even though those were. See, I want to answer this question also. Rahul Agarwal, Andy, you are gay. That's not a question. That's a statement. And I just want to say again that whoever says you are gay or you are gay, I don't care what you think. What I think is that if you have any homosexuality issues, it's probably reflecting on you. So you need to like figure out what your problem is with it. And if it's that you're homosexual, maybe, and that's okay. Everyone's allowed to love who they want to love. Love is love. So don't hate on anyone because of their sexuality. It's just useless waste of time. Anyway, so I just like to make sure that I never run away from these questions or these statements. I think it's important to air them out. In fact, let's talk about it in Time to Talk. We'll talk about homosexuality in India, and we'll talk about gay bashing. We'll talk about all of it on this show. This is what it's for. This is what we're here for. So wow, you guys. Okay, so I've been here for an hour and a half, and Abhinash is with me. So guys, take care of yourselves. We're gonna go now, and we'll see you tomorrow, 10:30 India time. मतलब 10 IST or 5 UK time. So take care of yourselves. I'll see you tomorrow.